Hello everyone, welcome to my channel. So today's topic is antidepressant. Anti means again, depressant means depression. So first of all, what is depression? Depression is a mood disorder in which person is having a feeling of sadness, loss of interest. Okay, so what are antidepressant? Antidepressant are drugs which are used to treat depression. So, what is the proper definition of antidepressant drug? So, antidepressant are medication used to treat major depressive disorders. मीन्स ये वो मेडिकेशन होती हैं जो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए होती है. डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स लाइक एंजाइटी डिसऑर्डर एंड मूड कंडीशन. नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ antidepressant? First is improvement of mood, relieve anxiety and reduce symptoms of depression. So these are the purpose. Now types of antidepressant. First is selective serotonin reuptake inhibitor. Second is serotonin norepinephrine reuptake inhibitor. Third is tricyclic antidepressant. Fourth is monoamine oxidase inhibitor. And last is atypical antidepressant. All of these classification work on serotonin and norepinephrine release because they maintain the mood in a person, or we can say they maintain the monoaminergic transmission in the brain. Now one by one we will see these types. So first is first classification is SSRI, which is selective serotonin reuptake inhibitor. Example of drug is fluoxetine and sertraline. Mechanism of action is it block the reabsorption of serotonin in the brain. Means ये brain में serotonin के reabsorption को block कर देता है, जिससे ये more amount में serotonin को available करता है. Now इस ड्रग के क्या साइड इफ़ेक्ट हैं? दीज ड्रग्स शो साइड इफ़ेक्ट लाइक nausea, insomnia, sexual dysfunction and weight gain. These all are the side effect of SSRI. Now जो इसका अनदर क्लासिफिकेशन है विच इज़ SNRI, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रिअपटेक इनिबिटर. इसके एग्जाम्पल ऑफ ड्रग है वेनलाफेक्सिन एंड ड्यूलॉक्सिटीन. नाउ इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज़ दैट कि ये ब्लॉक करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ बोथ सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन. सिमिलर ही है पिछले वाले की तरह, बट वो सेरोटोनिन का ही कर रहा है, बट ये नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन बोथ दोनों का ही जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको ब्लॉक कर देता है. नाउ क्या साइड इफ़ेक्ट हैं इस ड्रग के? सो फर्स्ट इज़ नोजिया, डिजीनेस, स्वेटिंग एंड dry mouth. These all are the side effects of SNRIs. Now we will see the another classification of drug which is MAO, TCA, which is tricyclic antidepressant. Example of drug is amitriptyline and nortriptyline. Mechanism of action of drug is block the reuptake of norepinephrine and serotonin. सिमिलर ये कि norepinephrine and serotonin के reuptake को ये block कर रहा है. Side effect is dry mouth, blurred vision, constipation, weight gain and drowsiness. These drugs show side effect like these all side effect. And now MAO, which is monoamine oxidase inhibitor. Example is phenylzyme and tranylcypromine. Now mechanism of action for this drug is it inhibit the activity of monoamine oxidase. Means जो monoamine है उसकी एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है, जिससे ये जो एंजाइम है ये ब्रेक डाउन करती है सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन को. नाउ what are the side effect of MAO? So first is high blood pressure, second is weight gain, third is sexual dysfunction. These drugs show all these side effects when they are introduced in our body. Now another classification is atypical antidepressant. Example of drug is bupropion and mirtazapine. Mechanism of action is it varies widely
ब्यूप्रोपाइन अफेक्ट द नॉरएपिनेफ्रिन एंड डोपामिन, एंड जो मिर्टाजेपाइन है ये अफेक्ट करता है सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन को। नाउ क्या साइड इफेक्ट है इस ड्रग के? वेरी बाय ड्रग, लाइक ड्रग पर डिपेंड करता है। लाइक जो ब्यूप्रोपाइन है ये कॉज करता है इंसोमिनिया एंड एजिटेशन, एंड जो मिट्राजेपाइन है ये कॉज करता है ड्राउजीनेस एंड वेट गेन इन पेशेंट। Okay, now we will see the indication for this drug. So first is major depressive disorders is the indication of this drug. Second is anxiety disorder, OCD, which is obsessive compulsive disorder, and last is post traumatic stress disorder, which is PTSD. Now what are the contraindications for these drugs? So first one is hypersensitivity, second is seizure, लीवर इंजरी, एन्यूरिज्मल वैस्कुलर डिजीज़, लाइक कोई भी एन्यूरिज्म अगर प्रेजेंट है तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है ये ड्रग्स। सो साइड इफ़ेक्ट इज़ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज़ लाइक नोजिया, वॉमिटिंग, ओके, सेक्सुअल डिसफंक्शन एंड वेट चेंजेस। दीज ऑल आर दी साइड इफ़ेक्ट्स फॉर एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। नाउ व्हाट आर दी रोल ऑफ नर्स while administering antidepressant? So first is advise the patient to take medication as prescribed, कि patient को prescribed medication ही लेना है। After starting the antidepressant drug, patient may feel sleepy, मीन्स जब भी वो एंटीडिप्रेसेंट को स्टार्ट कराया था वो स्लीपी फील करेगा, बट कुछ दिन बाद जो ये इफेक्ट है ये लेस हो जाता है। प्रोडक्ट कंटेनिंग कैफीन लाइक टी, कॉफ़ी एंड जो सिगरेट स्मोकिंग है उसको क्या करना है, पेशेंट को अवॉइड करना है, बिकॉज जो ये प्रोडक्ट है ये एफिशिएंसी ऑफ दीज ड्रग को क्या कर देता है, डिक्रीज़ कर देता है। एंड जो पेशेंट है उसको इमीडिएटली रिपोर्ट करना है फिजिशियन को अगर उसको एक्सपीरियंस हो रहा है माउथ सोर, थ्रॉट एंड कन्फ्यूज़न एंड इरिटेबिलिटी एक्सेट्रा, तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। These all are role of nurse for antidepressant. Hope this video help you out. Thank you for watching. Like, share and subscribe my channel.